Assalamu alaikum everyone, and a warm welcome to you all to this graphic designing course. My name is Amna Muhammad Jamil and I will be instructor for this journey. So I will share about my experience and career background shortly, but before that, let me introduce you to NS Training. So NS Training is a skill building platform focused on helping you grow professionally through high quality, accessible and affordable learning. What exactly NS Training has to offer to you guys? फर्स्टली आप लोगों को लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेंगी जूम पे where you will be attending an interactive session जहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा उन क्वेश्चंस पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे उसके रिकॉर्डेड क्या कहते हैं सेशंस आपको सेंड किए जाएंगे ताकि आप उसको कभी भी अपने ऑन पेस पे देख सकें देन आपको मेंटोर सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी कोर्स से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन करना है अपने टूल से रिलेटेड अपने असाइनमेंट से रिलेटेड एनीथिंग अबाउट this graphic designing course you can ask on your WhatsApp group, okay, which you will be added in. Then we will be launching LMS, learning management system, which allows you to access classes, submit assignments, and track your progress more easily all in one place. You will be able to join that as soon as it got launched. So, you are not just getting a course, you are entering a complete support system designed to help you succeed. So, now let me tell you a bit about myself and how this course can change your future as well. So, I have been in the graphic designing field for more than 4 years and have experience with tools like Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva, and more. I've worked with freelance clients, small business, as you can see here, social media teams, and even design branding for startups. As you can see here, there are Standy, there are QR code holders, then we have social media design, we have uh, chocolate wraps, we have magazine design. This involves in branding. Okay, this Standy and this magazine and this QR code stand involves in branding. Then I have some poster design. So basically, this was an international order. Okay, I have also worked with local and international both clients. So have experience for both of them and how you guys can deal with them. I can also teach you guys about that. So here are some package design, brochure designs. We have product designing, illustrations, logo design, digital art, then logo design, also mockups. So yeah, so here is my portfolio. And I have also teach many of the students and have already told them and taught them how they can deal with the clients, how they can polish their skill, and what are the important things to look into when they are getting an order. Now, what are the career opportunities that you will be having after completing this course? So, firstly, you can work as a freelance graphic designer. You can also work as social media designer for businesses and influencers. And you can also become in-house designer for companies and different brands. You can also become creative assistant in marketing or media agencies. You can also work as a content creator and brand identity designer also. So, even if you are a beginner level student, you don't know anything about graphic designing, it's totally fine. We are here to help you take the first step through our step-by-step well-planned course outline. Okay, so course outline को हम यहाँ पे देख लेते हैं. You will get a mind map on how you will be completing the course, how you will be learning step by step in this course. So there will be total 9 classes, as mentioned here, and
The first lecture, introductory lecture होगा for sure. Whenever you start something, there is an always an orientation on it. So what will it include? It will include how you can download and install your softwares, and also इसमें हम एक दो tools को भी देख लेंगे. So I will be teaching you guys step by step how you can download your software and then later on install it also. Okay. And you don't need to pay for this software. Then after downloading, installing your software, we will start working on it. So whenever you start something, you need to know the basics of it, right? और graphic designing के basics हमारे पास क्या है? Shapes and basic different tools उनके, ठीक है. अब shapes designing के अंदर shapes आ जाती हैं, ठीक है. So इस तरह की आप shapes बना देखेंगे और इन्हीं shapes को हम क्या कहते हैं, जब सीख लेंगे तो हम tools के जरिए इन्हीं shapes से different और elements और objects और designs वगैरह create कर पाएंगे. And then pen tool के लिए हमने totally different lecture रखा है because pen tool is a very important tool and pen tool अगर आपने सीख लिया तो you will be able to design. Okay, आप डिजाइन आसानी से कर पाएंगे. सो अब पेन टूल में हम करते क्या है, बेसिकली पेन टूल में हम वेक्टर ट्रेसिंग करते हैं. ओके, वेक्टर ट्रेसिंग आपके पास दो तरीकों से हो सकती है. मैनुअली जो होगी वो आप पेन टूल के जरिए करेंगे और ऑप्शंस के थ्रू आप जो करते हैं वो हम क्विक ट्रेसिंग के जरिए करेंगे. देन एज आई सेड कि अगर पेन टूल आप लोगों को आ गया अच्छे से तो आप लोग डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो हम नेक्स्ट लेक्चर से फौरन से अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे और डिजाइनिंग विल इंक्लूड business card designs like these, brochure designs, and we have template designs, we have product package designing. Okay. अब lecture 1 से लेके lecture 5 तक you will be covering all these lectures in Adobe Illustrator software. Okay. And from the sixth lecture, we will start our new software that is Adobe Photoshop. Okay. सो फोटोशॉप का फिर जो सिक्स लेक्चर में हम वही जिस तरह से हम इलस्ट्रेटर को डाउनलोड इंस्टॉल करना देखेंगे वैसे ही हम फोटोशॉप को भी डाउनलोड इंस्टॉल करना देखेंगे और उसके टूल्स की भी इंट्रोडक्शन हो जाएगी. अब डिफरेंस क्या है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में? डिफरेंस ये है कि इलस्ट्रेटर हेल्प्स यू इलस्ट्रेट, फोटोशॉप हेल्प्स यू एडिट फोटोज. ओके, नेम से पता चला फोटोशॉप फोटो एडिटिंग. ओके, सो हम फोटो एडिटिंग देखेंगे, हम सारे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम रियल इमेजेस को कैसे एडिट कर सकते हैं जो कि आप इलस्ट्रेटर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड ऑल्सो आप फोटोशॉप में डिजाइनिंग भी कर सकते हैं बट हम यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं रियल इमेजेस से. एंड देन लेक्चर 8 में हम लोगो डिजाइनिंग कवर करेंगे, यूट्यूब थंबनेल, पोस्टर डिजाइन, ब्रांडिंग, मॉकअप, एंड देन हम कैनवा को भी इवन देखेंगे. सो फोटोशॉप में हम इस तरह की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए हम रियल इमेजेस को यूज करके डिजाइनिंग करेंगे. यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल्स क्रिएट करेंगे, लोगो डिजाइनिंग करेंगे, मॉकअप्स को यूज करेंगे. एंड देन द लास्ट लेक्चर विल बी अबाउट Amazon इमेज डिजाइन एंड पोर्टफोलियो. सो लास्ट में हम अपने Amazon इमेज डिजाइन में बेसिकली हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे और इस तरह से कि वो बहुत ज्यादा आई कैची हो बायर्स के लिए. Or over the period of this 1 month, you would have created many of the assignments. Okay, और आप यही सारी assignments अपने portfolio में add कर सकते हैं. Okay, so portfolio आपको जैसा भी मैंने यहाँ पे show किया, it can be in a PDF or it can be like this in a website, Behance, as I've shown you my this portfolio. All right, so this was about the outline. So why should you be joining NS training? Because NS training will you will get practical and skill-based training. Then also we are providing you recording and mentor support. Also, the fee is very much affordable compared to other learning platforms. You will build a real portfolio by the end of the course. I've just told you in the outline part. Also, you will get freelancing guidance and certificate of completion also. Okay.
So you will be also awarded with a certificate, which will very much help you in your future when you will be applying for the jobs or dealing with the clients. So you're not just learning how to design, you are learning how to earn with your skill. All right. So if you haven't registered, you can register through our website or you can contact us on WhatsApp if you have any query about anything. We are here to support you guys. So see you guys in the class then.